guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, in today's video I will do a makeup video. So guys, in today's video I will show you that how I do my makeup, and you know there are lots of people and I have to go to a party, so I thought to make acha sa beautiful sa ek makeup create karo. I will do my eye makeup, and also I have purchased some beautiful things from Nykaa. I think we should not waste our time. We should get into the video and I'll show you how to do my makeup for wedding season, because the wedding season is also going on. So I will show you, and also I have purchased some new beautiful things which is like amazing. So let's get into the video. So first of all, I'm applying some primer. After that I will apply some foundation जो मैंने नया खरीदा था, but primer वो old वाला ही था. After that I'm applying the foundation all over my face. It's kind of like some silicone type, which is good. Okay. After that I'm applying some concealer. This is also the old one, so I'm applying the concealer. After that I'm blending it out with this beauty blender. ये भी पहले का ही है. So यहाँ पे मैंने जब blend करने के बाद मैंने थोड़ा brown shade लिया, so that मेरा eyebrows को थोड़ा thick कर ले, थोड़ा thick दिखने के लिए. After that I'm shaping up my eyebrows with this concealer. So अच्छे से shape करने के बाद it will look like amazing. It was looking good, to be honest. After that I will blend out the concealer so that it will look like the original type. After that ये वाला मैंने आई शेडो नया लिया हुआ है नायका से, of course. So यहाँ पे मैं यहाँ एक dark color लिया हुआ हूँ, like dark brown shade, so that I will blend it out all over my eyelid. So ये dark shade इसलिए लिया गया है because I want it little bit like pink smoky, so that's why मैंने यहाँ पे थोड़ा dark लिया है. After that I just blend out. उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा उससे light आपका pink लिया हुआ है, pink shade to apply on my eyelid. After that उससे भी light मैंने एक और pink shade लिया है, so that it will give you that big eye look. So यहाँ पे मैंने apply कर लिया है. After applying I will just go with some sparkle one. So यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, एक sparkle ले लिया है. लेने के बाद I'm applying over my eyelid, and then it will look like amazing. And of course आपका जो eyes है ना उसको आप बड़ा दिखेगा. And I'm applying over my lower lash line so that it will give you that great look. After that I'm applying some liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow लगाने से क्या होता है, आपका जो बीच का जो eyelid it will look good. After that I'm applying some concealer, so it will highlight my face. तो मैंने सोचा था कि ये इतना काम नहीं करता, बट यहाँ पे बहुत काम कर रहा है. लाइक आपका अगर डार्क एरिया है या डार्क सर्कल से इट विल कवर इट अप. सो आफ्टर आई एम ब्लेंडिंग ऑल ओवर माय फेस. आफ्टर ब्लेंडिंग आई विल गो विद द ब्रॉन्जर. सो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर ले लिया है. ये भी पुराना है गाइस, पहले का ही है, नया नहीं है. सो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर लिया. अगर आपके पास अगर कंटूर स्टिक है यू कैन अप्लाई दैट फॉर कंटूरिंग, बट आई एम यूजिंग दिस ब्रॉन्जर. आफ्टर दैट आई एम टेकिंग सम लूज पाउडर टू स्टिक करने के लिए. I'm applying all over my face. If you don't have loose powder, you can go with compact one. So ये मैंने जो blush है वो आपका नया लिया हुआ था, तो ये मैंने नायका से परचेस किया है. सो आई डोंट थिंक ये लगाने के बाद आपको कोई हाइलाइटर ज़रूरत है, बट इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई. आफ्टर अप्लाइंग सम आईलाइनर लगाने के बाद अगर आप नीचे लगाओगे तो अप्लाई सम वाइट काजल. आफ्टर दैट अप्लाई द आईलाइनर, इट विल लुक बेटर. आफ्टर दैट अप्लाइंग सम लिपस्टिक एंड सम हाइलाइटर to give you that great look. And this is the look guys. I hope you like the look. If you like the look, please do like, subscribe and share. I'll see you in my next video. Bye.